Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the growth phases in bacteria. So let's move to the classboard. So dear students, growth of bacteria. Another important topic. So growth refers to increase in the number of bacteria. So मैं पहले से भी आपसे ये बात अर्ज कर चुका हूँ कि ग्रोथ का मतलब जैसे कि हमारे अंदर एक टिपिकली ट्रेडिशनली हम ग्रोथ का मतलब ये लेते हैं कि जैसे इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल और इंक्रीज इन द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म. सो दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड ओवर हेयर. तो यहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ का मतलब है कि उनके जो नंबर इंक्रीज करना. क्लियर? सो ग्रोथ of bacteria refers to increase in number of bacteria. And dear students, there are four distinct phases in which the growth of bacteria occurs. तो उससे पहले एक important short question है which is given in our book, that is generation time. Important short question, इसको mark कर लें. Generation time. The interval, the time interval of complete next division. तो जब तक एक बैक्टीरियल सेल जो अभी प्रोड्यूस हुआ है जब तक वो मुकम्मल तौर पर डिवाइड नहीं हो जाता, इस टाइम इंटरवल को कहते हैं जनरेशन टाइम. इज कॉल्ड generation time. Clear? Now, the phases of growth. So there are four distinct phases in which the growth occurs. The growth of bacteria occurs in four distinct phases. That is, number one,
the lag phase. Number 2 is the log phase. Number 3 is the stationary phase. And number 4 is death or decline phase. Clear? And now we are going to discuss each in detail. So number 1, the first phase is lag phase. So it's a phase of no growth. यहाँ पर कोई ग्रोथ नहीं हो रही फिलहाल. इसको MCQ के लिए भी मार्क कर लें. फेज ऑफ नो ग्रोथ इज कॉल्ड लैग फेज. तो फिर यहाँ पर क्या होगा? What will be happening over here? The cell or the bacteria prepares for division. वो अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर रहा है. मतलब कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो डुप्लीकेट हो रहा होगा, मीन्स की रेप्लिकेशन ऑफ DNA इज बीइंग टेकन, और इसके साथ सेल साइज जो है वो इनलार्ज हो रहा होगा. सो दीज आर द स्टेप्स विच आर बीइंग टेकन ओवर हियर इन द लैग फेज. यहाँ पर कोई सेल डिवीजन नहीं हो रही, मतलब कि उससे पहले जस्ट प्रिपरेशन हो रही है. तो चूंकि हम यहाँ पर नंबर इंक्रीज नहीं कर रहा बैक्टीरिया का, क्योंकि ग्रोथ का मतलब है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, तो इस वजह से हम कहते हैं कि इट इज़ अ फेज ऑफ नो ग्रोथ. नाउ द सेकंड फेज इज log phase. And this is a phase of rapid growth. This is a phase of a rapid growth, and bacteria reproduce at exponential rate. Means कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऑन एंड ऑन एंड ऑन, इस तरह से. सो रैपिड ग्रोथ हो रही है यहाँ पर, मतलब कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज कर रहा है, बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर रहा है. इस वजह से इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. क्लियर? नाउ द थर्ड फेज is the stationary phase. So what is meant by stationary? Stationary means still, no further improvement. एक जगह किसी चीज का रुक जाना. Clear? So during this phase, the growth rate remains the same. So how this is possible? The death rate becomes
equal to reproduction rate. तो जितने बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो रहे हैं उतने ही मर रहे हैं. आप थोड़ी देर पहले छोड़ के गए थे, लेट्स सपोज 50 की काउंट में, ठीक है, 50 बैक्टीरिया वाज देयर इन द कल्चर. तो थोड़े 10 मिनट के बाद भी आप आए या 20 मिनट के बाद या 1 घंटे के बाद आए तो वो उतने ही हैं. मीन्स कि वहाँ पर कोई ग्रोथ नहीं हुई, मतलब कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया ने इंक्रीज नहीं किया. तो ऐसा नहीं है कि वो स्टिल हो गए, तो रिप्रोड्यूस भी हो रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ जितने रिप्रोड्यूस हो रहे थे उतने डेथ भी हो रही थी, उतने ही मर रहे थे. So that is why it is called as the stationary phase. And finally, the fourth stage or the fourth phase is the death or decline phase. Decline का मतलब होता है किसी भी चीज के अंदर कमी आ जाना. क्लियर? कमी वाक़ई हो जाना, that is called as decline. और ये उसी वक्त पॉसिबल होगा जब डेथ रेट बढ़ जाएगा और रिप्रोडक्शन रेट कम हो जाएगा. सो इन दिस फेज द डेथ रेट increases and reproduction rate decreases. Means कि जितने बैक्टीरिया उसमें प्रोड्यूस हो रहे थे उससे कहीं ज़्यादा मर रहे हैं. अगर 10 रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो 20 की डेथ हो रही है, तो अल्टीमेट नंबर आप काउंट जो होगी वो आप देखेंगे कम होना शुरू हो जाएंगे. सो दिस इज कॉल्ड एज डेथ और डिक्लाइन फेज. इन ग्रोथ फेजेस को हम एक ग्राफ के जरिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. So by this kind of graph we can represent them. So this is the first phase, that is lag, and over here it is log, and over here it is stationary, and over here it is decline. तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्राफ ऐसे नीचे को आ रहा है. यहाँ पे बिल्कुल कांस्टेंट है, कोई ग्रोथ नहीं हुई. यहाँ पर सडन ग्रोथ हुई, बहुत ऊपर तक चला गया, उसके बाद फिर कांस्टेंट हो गई और फिर उसके बाद डिक्लाइन. सो दिस इज द ग्राफ विच रिप्रेजेंट्स डिफरेंट फेजेस ऑफ ग्रोथ. डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा एक और चीज़, द बैक्टीरिया इट लैक्स द ट्रेडिशनल जो सिस्टम होता है, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और इसमें समटाइम्स देयर इज ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रोसेस जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब स्ट्रक्चर डिस्कस किया था पिलाई के अंदर, कि वहाँ पर कुछ बैक्टीरिया जिनके पास प्लाज्मिड्स होते हैं और जिनके पास प्लाज्मिड नहीं होते, सो वो ये आपस में कॉन्जुगेट करते हैं. ये अपने जो पिलाई होते हैं उनको ऐसे फ्यूज़ करते हैं. पिलाई जो थे दे वर द ट्यूबुलर एंड हॉलो स्ट्रक्चर्स जो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म से कनेक्टेड होते हैं. तो बैक्टीरिया क्या करेंगे, वहाँ से इस प्लाज्मिड को ट्रांसफ़र करेंगे टू द रेसिपिएंट बैक्टीरिया जिसके पास वो प्लाज्मिड मौजूद नहीं है. तो इस तरह से वो अपना जेनेटिक मेकअप जो है उसको आगे पास ऑन कर सकते हैं. बट दिस जेनेटिक मेकअप इज़ रिलेटेड टू द डिजीज़ प्रिवेंशन. ठीक है, सो इससे डिजीज़ प्रिवेंशन हो सकती है, पेस्ट प्रिवेंशन हो सकती है, या मुख्तलिफ कंडीशंस को टॉलरेट करने के लिए ये बैक्टीरिया ऐसा करते हैं. सो दैट वेरी प्रोसेस इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेशन. So bacteria lacks traditional sexual reproduction
and they can only reproduce by binary fission, जो हम इससे previous lecture में discuss कर चुके हैं. Some bacteria which have plasmids. So what are plasmids, dear students? These are double-stranded DNA, circular DNA, extra chromosomal DNA. ये सारे इसी के नाम थे जिसके ऊपर जीन्स होते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के, ठीक है. So which have plasmids for antibiotic resistance, especially. Are transferred are used to transfer the copy of plasmids to the bacterium which lack plasmid by pili called sex pili. अब पिलाई तो उसके ऊपर बहुत सारे थे, लेकिन जो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होंगे उसे सेक्स पिलाई कहा जाएगा. क्लियर? तो जो फिलहाल उस वक्त मौजूद हैं कॉन्जुगेशन में, सो उन्हीं को सेक्स पिलाई कहा जाएगा. So lacks the plasmid by pili called sex pili, and the process is called as conjugation. That is called as conjugation. Clear? Now, dear students, there is another topic which is importance of bacteria. Importance of bacteria. So they are important on every aspect, ecologically, medically, and economically. So from every aspect they have a great importance. So first of all, we will discuss the ecological importance. So dear students, जहाँ तक इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस की बात है, बैक्टीरिया के अंदर ये खासियत है कि वो ग्रुप्स बना सकते हैं. They can adapt themselves as groups. So bacteria have the ability or capacity to make groups so are important ecologically. So ecologically के एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जो इंटरेक्शन होता है उसको हम स्टडी करते हैं. ठीक है. This the bacteria are present in our ecosystem. So ecology is related to ecosystem here. Ecosystem as decomposers. तो जब हमने न्यूट्रिशन में इसकी क्लासिफिकेशन की थी तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो सेप्रोफाइटिक
बैक्टीरिया होते हैं वो डीकम्पोजर्स होते हैं along with fungi and they are used to return the materials back to the other organisms से environment से वापस organisms में लाने में इनका बहुत important role है, ठीक है. So that is important thing. They act as decomposers और decomposers में कौन से बैक्टीरिया शामिल हैं? The saprophytic. Not all bacteria are decomposers. The saprophytic bacteria, they are the decomposers. Clear? और इसके अलावा एक और इसकी बहुत अहम तरीन जो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछी जा सकती है, that bacteria play important role in maintaining and running biogeochemical cycles. For example, bacteria which are included in maintaining the biogeochemical cycles, उसमें कौन कौन से cycles included हैं? Like the nitrogen cycle, उसको maintain करने में. Number 2 is the carbon cycle. And phosphorus cycle. And the sulfur cycle. So these 4 cycles has been enumerated in our book. So आपको ये चारों के नाम आना चाहिए, कोई भी एक इसमें से मिस करवा कर आपसे MCQs पूछा जा सकता है. क्लियर? सो नाइट्रोजन साइकिल आपने पढ़ा हुआ है ग्रेड 10 के अंदर भी, जिसमें जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया और एमोनीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रोजन साइकिल में हेल्प करते हैं. जो डीकम्पोजर्स हैं वो डेड ऑर्गेनिक जो प्रोटीन्स होती हैं प्लांट्स या एनिमल्स ख़ास तौर पर, उनकी प्रोटीन्स को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, द एमोनीफाइंग बैक्टीरिया. फिर एमोनीफाइंग बैक्टीरिया जब वो अमोनिया में कन्वर्ट कर चुके होते हैं, उस अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है इनटू नाइट्राइट्स बाय another group of bacteria present in the soil, that are the nitrosomonas. There is another group of bacteria present in the soil which convert these nitrites into nitrates, and these nitrates are now being used by the plants or the producers which make the nitrogenous compounds for them. और इस तरह से फिर they are passed on to the herbivores and then the consumers and then to the decomposers, on and on. तो organism से एनवायरनमेंट से वापस ऑर्गेनिज्म. सो इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है. जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको भी फिक्स करने में इनका रोल है, ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है. बहुत सारे बैक्टीरिया जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को भी फिक्स करते हैं, लाइक द राइजोबियम जो रूट नोड्यूल्स में मौजूद होते हैं प्लांट्स की, इन सर्टन प्लांट्स राइजोबियम. तो इट हेल्प्स इन द नाइट्रोजन साइकिल रनिंग एंड मेंटेनेंस. सो दिस इज़ हाउ दे आर इकोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट. और अगर ये डीकम्पोजर बैक्टीरिया ना हो, so dear students, it will create a big problem, a huge problem will be there, कि क्योंकि जो डेड ऑर्गेनिज्म जो दुनिया से जा चुके हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, तो उनकी प्रोटीन्स को अगर ये डिकम्पोज नहीं करते या उनको ये डिकम्पोज नहीं करते तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं दे बिकम लॉक्ड. तो जिसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट साइकिल होते हैं वो रुक जाएंगे. ये बायोजियोकेमिकल साइकिल्स जो होंगे ये वहीं पर स्टॉप हो जाएंगे. तो जो फ्लो है इन न्यूट्रिएंट्स का वो भी रुक जाएगा. तो इस दुनिया कायनात के अंदर जो चल रही हैं फूड चेन्स और ऑल दीज थिंग्स दे वुड बी स्टॉप्ड. लेकिन ऐसा नहीं होता, थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह के उन्होंने इनको प्रोड्यूस करा, एक बाकायदा एक सिस्टम बनाया इनका. सो दिस इज़ हाउ दे आर इकोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट. तो मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर्स में इनकी मज़ीद जो इंपॉर्टेंस है, लाइक द इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस एंड द मेडिकल इंपॉर्टेंस, उसको भी डिस्कस करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे मज़ीद द इम्पॉर्टेंसेस ऑफ बैक्टीरिया.
like the medical importance and the economical importance. तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।